हेलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल. So first of all we have to draw the diagram of electric dipole. Then if I define the electric dipole, then two equal and opposite charge when they are placed at a small distance, then they form a electric dipole. Let us consider the charge minus q and plus q are placed at a distance 2l and point O is the center of the dipole. So the distance of minus q charge from the center of dipole is L and the plus q charge from the center of dipole is L. And we have to calculate the value of electric field intensity at any point P which is at the distance or from the center of dipole. So the distance of plus q charge from point O will be r minus L, and the distance of minus q charge from point P will be L plus R. We know that the electric field at any point due to point source is equal to kq divided by r square. So we first write the formula of electric field, and we know that the electric field is inversely proportional to the square of distance between the source charge to the point where we have to calculate the value of electric field. So the value of electric field due to plus q charge will be away from the point P. Let us consider this is the value of electric field EQ due to plus charge, and the value of electric field at point P due to minus q charge will be attraction, that means E minus Q. The value of EQ will be greater than the value of minus EQ. So we can write that we know that the value of electric field due to plus q charge will be E due to plus q charge will be kq divided by r square, and the distance r is taken from the charge to the point where we have to calculate the value of electric field. So the distance of r from the point q to point P will be r minus L. So we put the value r minus L का square. Let us assume this is the equation 1, and we know that the value of electric field due to minus q charge will be kq divided by distance between the charge and the point will be equal to L plus R. L plus R का whole square. This is the equation number 2, and we know that the electric field is a vector quantity. So the net electric field will be equal to E1 plus E2. If we put the value of electric field with direction, then the net value of electric field will be E due to plus Q minus E due to minus Q. So the net value of electric field E net will be E due to plus Q minus E due to minus Q charge.
So the E net will be KQ divided by R minus L का स्क्वायर माइनस KQ divided by R plus L का स्क्वायर. We take common KQ from the both term, then we get KQ 1 divided by R minus L का स्क्वायर माइनस 1 divided by R plus L का स्क्वायर. So KQ, and we take the LCM of the two terms, then this will be R minus L का स्क्वायर into R plus L का स्क्वायर. And when we divide R minus L square via R minus L square into R plus L square, then R minus L square is cancelled with the R minus L square. So the remaining term will be R plus L का square multiply by 1, then it will be R plus L का square minus, when we divide R plus L square to the R minus L square into R plus L square, then R plus L का square is cancelled with the R plus L का square, then we get R minus L square multiply by 1 R minus L का square. So E net will be KQ, and we expand the term R plus L square minus R minus L square. Let us assume this is A and this is B, तो A plus B का whole square, then it will be A square plus B square plus 2AB, and it will be A minus B का whole square, that means A square plus B square minus 2AB. तो after expanding it will be R square plus L square plus 2LR minus R square plus L square minus 2LR divided by R minus L का स्क्वायर इंटू R plus L का स्क्वायर. And after open the bracket, the minus sign will be multiplied in each term. So E net will be KQ R square plus L square plus 2LR. यहाँ पे अगर हम माइनस साइन का अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2LR डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज कैंसल विद माइनस आर स्क्वायर एंड माइनस एल स्क्वायर. Then the remaining term will be plus 2LR and this will be equal to plus 4LR. So E net will be KQ into 4LR divided by R square minus L square का whole square. And we know that the distance between the dipole या लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ डाइपोल टू द पॉइंट एच विच वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स एल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर. सो एल इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू आर. देन वी कैन नेग्लेक्ट द एल. So remaining term will be E net will be K into Q into 4LR. तो इसको हम लिख सकते हैं 2L into 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. और यहाँ पे एल स्क्वायर को हम कैंसिल कर देंगे तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर की पावर 2 तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 4. यहाँ पे Q इंटू 2L इसको हम लिख सकते हैं P. तो यहाँ पे E नेट हो जाएगा K इंटू E इसको हम लिखेंगे P.
ये हो जाएगा 2r डिवाइडेड बाई r की 2 पावर 4। यहाँ पे r के 1 पावर से यहाँ पर r का 1 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट की वैल्यू आएगी वो होगा 2k p डिवाइडेड बाई r टू द पावर 3। या इसको हम दूसरे टर्म में लिख सकते हैं, k की वैल्यू पुट करेंगे तो k की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट होगा 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p, तो 2p डिवाइडेड बाई r क्यूब। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस q चार्ज इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस q चार्ज, सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will be in the direction of the dipole।